Panch Parivartana aspects in their personal, family and professional life. So to reach these messages to a mass level, this Sammelan will be conducted. As I have already said, it is also to galvanize the strength of Hindu society, so that a society should feel confident, society should feel united and harmonious in their daily life. The fourth program that we have thought of is Sadbhav Baitak, that is goodwill. In our society, many a time, some differences which arise. But because of efforts of many social reformers in the past and many great leaders in the society, because of the efforts of Rashtriya Swayamsevak Sangh Karyakartas also, we have been able to achieve that the cohesion and unity of the society, although there may be various groups socially, so we should live together. There may be Pantha Sampradaya, caste and communities. So all those things are Hindu Samaj realities. But as a society, we should be one. So this Samajik Sadbhav Baitak will emphasize on that, and also how we can have reformation according to times in our own societies, in our own small units and components of our society. Because a society, a living society, should accept the newer things of life without losing its cultural roots. And that has been the beauty of Hindu society. We have seen in Kumbh Mela, which was recently concluded at Prayagraj, that the vast multitude of this country, crores and crores of people, they throng to have a dip in Trimeni Sangam. Our cultural units, cultural roots are so strong, but those who had come there, they have accepted many of the modern life's developments. So they can go together. So this in our goodwill meetings at block level, Samaj Sadbhav Baitak, we want to see that these things are pointed out so that our people can have the rich culturally, philosophically, spiritually, well-founded life, accepting the modern life's realities. So without losing cultural foundations. And also to live harmoniously. And also to see that the younger generation is free from any addictions, or gender equality can be emphasized. Cleanliness in the localities, communities, villages, wards, urban areas. So like this, there are many things that a organized community can achieve. So we want to see that these things are taken up as a society. So these goodwill mission meetings, Samajik Sadbhav Baitak, will try to achieve that. And another program that we have thought of is, at all district levels, we want to have the meeting of intelligentsia, Pramukha Jana Goshti, to discuss the national issues and the one nation, one culture, and our nation's national integrity, how Sangh's Hindutva philosophy has found support in all these years. And as I have told in the past also, and Sangha Karyakartas have been giving this message to larger society,
विमर्श को बदलना है. The narrative that is set many a time has been distorted one. इसलिए इस विमर्श को बदलने के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए जिला केंद्रों पर प्रमुख जनगोष्ठी के द्वारा हम ऐसे समाजोपयोगी राष्ट्रोपयोगी विषयों को अपने देश के वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर करेंगे. तो दिस इज अनदर प्रोग्राम विच वी विल बी हैविंग एट ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स. And then we are going to have within Sarasanga Chalak this interaction with the intelligence of the society in 4 major cities, Delhi, Bengaluru, Mumbai and Kolkata, so that to set the trend of, as I said, the narratives, Sarasanga Chalak will be addressing. That is in 2026 second part. And we are going to have in more than lakh places 1 week shakas, because many newer areas where we reach, there the continuity should be ensured, because in new places new karyakartas they have to be trained to have daily shakas. उसके लिए हम उस प्रयत्न को करने के लिए एक व्यापक शाखा के कार्यक्रम सितंबर 25 से अक्टूबर 10 के बीच में करने वाले हैं. And we have asked the all prants, various provinces of Sangha to take up some program for the youth, age group 15-30, college students and non-student youth as well. For them, it may be Panch Parivartan, it can be narrative setting, it may be patriotic activities, Seva activities. So they should be ready to pay back for the society, and the new generation of our society should emerge to make Bharat great and prosperous. So prepare the youth. And that's why each province will check out some program for the youth of the age group 15-30. So these are the activities that we have thought of. So I think I have given 3 important things. One is Rani Abbaka, second is the resolve that we have asked, and the third is the program that we have decided for the centenary year. So this will be our next year's preparation. So now I request you to ask if there is anything. And in the beginning also as well, you have been very cooperative, and every time the media has been giving enough publicity, and many a time because of media, the RSS is in the center of discussion. So I think your contribution in making RSS better known is always welcome. Thank you. जी दत्ता जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, मैं टाइम्स नाउ नव भारत दिल्ली से हूँ. पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो औरंगजेब हो या मुस्लिम शासक हों, उनकी कब्र को हटाने के लिए कई हिंदू संगठन जो हैं वो आगे आ रहे हैं. और इस पर आपका क्या कहना है, और वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या सोचता है, ये भी हम जानना चाहते हैं. वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे. और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ, irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था. आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है. तो ऐसे कई यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. तो बहुत सारे ऐसे हुआ है. तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है. वो जो हुआ है अभी तक वो सही दिशा में चला है,
सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और औरंगजेब के बारे में तो हुई है। देखिए, समाज में कोई भी किसी विषय के बारे में उठा सकते हैं, संघ का कहना नहीं है। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है, वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होंगे, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा शिकोह के बाद मैंने कहा, तो ये अपने को सोचना चाहिए। दिस इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्म व्यू, विच इज द व्यू ऑफ दिस लैंड। ದತ್ತಾಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಟಿವಿ 9 ಇಂದ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನ ಕೂಡ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನಿಲುವೇನು? ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಸಂಘ 16 ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪದೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ 4% ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಘದಿಂದ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಧಾರಿತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया। इलेक्शन के पहले सबने अनाउंस किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया. सो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल. बैकवर्ड क्लास विद इन दैट रिलीजन इट इज देयर. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर है. बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन. सी दैट इज वाई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. होसबाले साहब, मेरा नाम राघवेंद्र राव है, मैं बीबीसी न्यूज़ दिल्ली से हूँ. पिछले करीब 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. अब संघ भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक है. उस हैसियत से मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? दूसरा ऑकेशन हम करेंगे. नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? इलेक्शन के समय आकलन देश के लोगों ने किया है. संघ देश से अलग नहीं है. और अभिभावक तो हम किसी भी सरकार का आते तो हम अभिभावक देने के लिए तैयार है. केवल
भाजपा के लिए अभिभावकत्व देना ऐसे हमारा नहीं है। हम अभिभावकत्व कोई भी पार्टी आकर होंगे तो हमारे विचार बैठता है तो हम अभिभावकत्व किसी को देंगे, देते नहीं आते नहीं वो अलग बात है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके मुताबिक वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उन्हें ज्यादा ईमानदारी से काम करना चाहिए? हम उनसे मिलकर बताएंगे। ऐसे है तो अभी ऐसी स्थिति कोई नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। नमस्ते। अभी देखिए, संघ के स्वयंसेवक रोज उठकर हम सरकार को ये करो वो करो हम नहीं कहेंगे। जनता कह रही है, ऐसे विषय जब आता है हम कई विषय अपने कार्यकर्ता अपने स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो है वो व्यक्त करते हैं। दे आर ऑल प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड वी हैव ए मैकेनिज्म वेयर such things are discussed. If there is something, definitely our राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ comes out with the thing. अभी हमको लगता है ठीक है, अभी चल रहा है, अच्छा है, देश की सुरक्षा के, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के विषयों का अच्छा चल रहा है। अब लोगों को मौका भी मिलता है राज्य और लोकसभा के चुनाव के समय, और लोग व्यक्त करते भी हैं, तो इसलिए ऐसा कोई स्थिति नहीं कि हम आज आकलन करें। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ आकलन को रिलीज नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत सारा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका आकलन क्या है ऐसे देश में कहेंगे तो रोज आकलन करके बताने की हमारी कोई पद्धति नहीं है, तो समय समय पर आकलन होता है। ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಮಸೂದ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ RSS ಕಡೆಯಿಂದ PAಗಳ ನೇಮಕ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ? ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಏನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿಷಯ ಆಗೋಗಿದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ PA ನೋಡಿ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಏನು, ನಿನ್ನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಏನಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಯಾವ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇಖಿए, those who are in politics, they can make every day some statement about these things. It is for them to do that because it is their activity. Sangha cannot say this without any draft, without anything that has been published officially. So we cannot answer on these things. And already the Home Minister is on record. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಘ, if it is necessary, we will react on that. Now there is nothing of that kind. They are going to do something, the delimitation, etc. New thing, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮೊದಲೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಾಟಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘ ಮೊದಲೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು PA ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂಘ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ. And many people get appointed. See, for example, I'll tell you, when there was no BJP government in any state or any, even at the level, Sangha Swayamsevaks have been appointed for various things. So why? Because of their eligibility, because of their capability, their competence, their merit, the selection process takes place. All those who have been appointed are neither 100% nor Swayamsevaks, or they are Swayamsevaks, that is why they are appointed. No. On the basis of their capacity, eligibility, their experience, and the convenience of doing things, somebody can appoint. And Sangha Swayamsevaks are not barred to be appointed. They have every right as citizens to get appointed. If there is something that is illegal, then they
necessary action can be taken. There is nothing of that kind. What is the problem there? They are citizens. If they are capable, why they should not be appointed? जी नमस्ते रमेश विक्रमा कन्नड़ वीकली से in your statement about present national scenario you said that administrative level in the decisions administrative level in the recent past I am asking what is the relevant of this recent past. Is this recent past is after the Biren Singh's resignation of 37 days in Manipur? In Manipur's connection, in Sarsanga Chalakji also in last 9 months before said that priority should be given to Manipur. Yes. So you are saying that before that the Manipur government has not taken action to calm down the situation in Manipur. No, the thing is what I have said, it is so clear. The government on the basis of its own assessment, any government takes decision. We have a right to demand certain things. And Sangha has said, yes, there should be something. We have not said this should be the step or action or that should be the. We have suggested address the incident, issues and the situation of Manipur immediately. We have not demanded whether this particular action should be taken or not. That is for the government, and on the basis of their assessment, they have taken a decision. They have clamped the president rule, they have kept it in suspension, and they have taken some administrative actions in the form of, for example, disarming the people, opening the highways. There are many such administrative things they have taken up. So I think because of that, some hopes have been raised. So we are happy that the government has addressed the situation, and people are also now feeling, because the Manipur people have come here, they are telling at least there is some succor now. So let us hope there will be more such actions on the part of the government, and the different sections of the society in Manipur, they will live harmoniously. So this is what we have expressed. नमस्कार सर, मैं मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। 2 दिन पहले मालेगांव की ट्रायल मुंबई के कोर्ट में जो कई सालों से चल रही है, 2 दिन पहले वहां एक अक्यूज्ड के एडवोकेट जिनका नाम रंजीत सांगले हैं, उन्होंने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि एक अफसर थे एटीएस के, उनका नाम मुजीबुर रहमान है। वो अफसर ने सोलापुर के न्यायालय में एक लिखित तरीके से अपनी अवधि दी है। उनका ये कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी 2008 में, उस वक्त एटीएस के कुछ टॉप अफसर ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिया था कि नागपुर जाइए और रेशम बाग से मोहन भागवत जी जो सरसंघचालक हैं उनको अरेस्ट करके लाइए इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में। मेरा सवाल आपसे 2 है। पहले, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे बात पे, क्योंकि अब ये कोर्ट में बोला गया है। दूसरा, कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की इंस्ट्रक्शंस देना कोई छोटी बात नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। तो क्या जरूरत है इस बात के तह पर जाने की कि ये इंस्ट्रक्शंस कहां से आए थे? उस वक्त की सरकार कांग्रेस की थी महाराष्ट्र में, उस वक्त की सरकार यूपीए की थी सेंटर में। ये इंस्ट्रक्शंस क्या ऊपर से आए थे? इसकी तह तक जाने की क्या जरूरत है? It is now sub judice. I do not want to comment upon this. बोलिए जल्दी से। My name is Archis Mohan. I'm from Business Standard. I have 2 questions. आवाज। One, all organizations, including an organization such as Rashtriya Swayamsevak Sangh. Your voice is not clear. No, you can. All organizations judge their accomplishments at times on specific parameters. What would you say would be specific parameters of judging the last 100 years? Would it be construction of a Ram temple? Would it be the election and continuing of a government that's sympathetic to the cause and ideology of the RSS at the center? And similarly, what could be the parameters of the next decades? Would it be UCC or something else? So if you could elaborate on that. Secondly,
You said, संघ की मान्यता ये है कि आक्रांता वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए. उसमें आपने एक डिस्टिंक्शन रखी दारा शिकोह और औरंगजेब की. उसी में आप संदर्भ में आपने कहा राणा प्रताप. तो मैं दारा शिकोह के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे टेक्स्ट का अनुवाद किया. मैं समझना चाहता था कि दारा शिकोह और अकबर में किस तरह का आप डिस्टिंक्शन. ये एकेडमिक डिस्कशन है, कभी करेंगे इसका. वो हम इसके बारे में भी कह सकते हैं. अकबर के बारे में बहुत सारे ऐसे विचार भी आ सकते हैं. इसलिए मेरा कहना है, आई गेव वन एग्जाम्पल अबाउट दारा शिकोह. इथॉस के क्या है, तो इसलिए उसके आधार पर अपने को चलना चाहिए. एकेडमिक डिस्कशन क्या है, सब तो सर्टेन हिस्टोरिक फैक्ट्स के बारे में हर 5 साल में नई चीजें आती हैं, इसलिए उस डिस्कशन में तो अभी हम नहीं जा सकते. बट इट इज एन एकेडमिक थिंग. People have to go deep into this. Now, for the sake of Aurangzeb's question, I have answered that. The first one is parameter thing. Sangha has not set any parameter. As I have said, Sangha is a part and parcel of the society. It is not out of the society, or Sangha is not an organization with society. So, for example, you mentioned about the construction of Ram temple. I don't consider this as an achievement of Rashtriya Swayamsevak Sangh. It is an achievement of society, the larger Hindu society, our nation. Because भारत के अस्मिता को, भारत के नेशनल आइडेंटिटी को रीएस्टैब्लिश करने का कार्य अपने समाज ने किया. एक जमाने में सोमनाथ मंदिर के कुलपति मुंशी और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों के मूर्धन्य नेतृत्व में हुआ. आरएसएस तो नहीं था उसमें. तो इसलिए ऐसे चीज समाज करता है, इसलिए वो समाज के ही उपलब्धि है. इट इज द अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी, द नेशन. नाउ संघ के दृष्टि से हम कहेंगे तो देखिए, नंबर 1, संघ ने ये कहा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों विषयों में हम संघ के कार्यकर्ता के नाते, मैं या मेरे जैसे लाखों करोड़ कार्यकर्ता ये हम फील करते हैं, भारत में हिंदू कहने का विषय ये शर्मनाक नहीं है, ये गर्व का विषय है. अब ये हिंदू कहना कोई गलत नहीं है. हिंदू इज ए नेशनलिस्ट एक्सप्रेशन, और हिंदू केवल रिलीजियस एक्सप्रेशन नहीं है, ये कल्चरल, स्पिरिचुअल, सिविलाइजेशनल एक्सप्रेशन. हिंदू करके केवल रिलीजन की बात नहीं है. ये संघ ने पहले दिन से कहा, ये यहाँ के नेशनलिटी के, यहाँ के सिविलाइजेशन के नाम है. धीरे धीरे भारत में इस दिशा में एक्सेप्टेंस बढ़ते गया है, विच वी फील इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस. अनदर थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग हिंदू सोसाइटी वॉज एन अपील टास्क बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस its diversities on the basis of many things, and to a great extent it has been possible because of the involvement of ordinary people and elites of our society. So organizing Hindu society is possible. This is now felt. The reawakening of the Hindu society for its welfare and many such things. So that is, we can say, has been achieved. Now Hindu society feels that there was a time when in the name of secularism, which was pseudo-secularism, and because of the distorted historic versions, our people are felt diffident. Now a confident Hindu society, a vibrant Hindu society is emerging. But at the same time, Sangha wants to say, just because it is confident and vibrant, all the things have not been achieved. In our society, many corrections internally are also required. For example, the issues like untouchability or the approach of a large section of society towards women folk, all these things are not up to the mark. Although the Hindu society is awakened, these issues are yet to be achieved.
So Sangha wants to see that these things are also achieved. Then we can say some more parameters have been achieved. So this is what we feel at this juncture. I have given only some examples. A list may be more on both sides. Achievements and to be achieved. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ Yeah. ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಜಾತಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿಯನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ RSS ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಇಂಥದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಂಘದ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸಂಘ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ कास्ट, एनी एफर्ट रिमूविंग का जाति विनाश आपने कहा, वो जितने जितने करते हैं जाति उतने उतने स्ट्रांग होते जा गया है. इसलिए व्हाट संघ हैज सेड, इफ यू वांट टू मेक ए लाइन शॉर्टर विदाउट टचिंग इट, you should draw a bigger line, then it becomes smaller line. This is the approach of Sangha. That is why we said we are all Hindus. And we have gone saying those who have taken birth in our country, they are all Hindus because their forefathers are Hindus. So once the Sangha, what is the Sangha's approach? People who come to Shaka, who have attended Shaka, and their families, they have overcome this casteist feeling. So Sangha, there is no question of making any declaration, taking out a rally, organizing conferences to remove, destroy caste, annihilation, all these things. Silently, every day, Shaka in every basti will ensure removing the caste mentality in the minds of the people. This has been our experience. I think nothing else is required. Sangha is going to do only this. Sir, माइक सर मैं आमोद हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरी एक सर मेरी एक जिज्ञासा है जो जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी चल रही है। 8-9 महीने से नया अध्यक्ष अब तक नहीं आया है, और अब क्या आप लोगों से कोई बातचीत हुई है कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, या आपने पिछले 6-7 सालों से कोई प्रचारक भी नहीं भेजे हैं बीजेपी में, तो क्या इस बार कोई प्रचारक भेजने की संबंधी वार्ता हुई है आप लोगों की? तो इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए। पहली चीज है ऐसे प्रचारक को भेजना छोटा सा सवाल ऐड है। सवाल ये है क्योंकि समय समय पर संघ जो है अपने संबंधित संगठनों को, अनुशासनिक संगठनों के लिए सुझाव देता है। क्या बीजेपी की तरफ से कोई अध्यक्ष पद को लेकर आपसे सुझाव मांगा गया है? अगर सुझाव मांगा जाएगा तो क्या संघ की तरफ से सुझाव अध्यक्ष पद के लिए दिया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दशकों में और इस तरीके के सुझाव दिए और जा रहे हैं। 35 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में BMS के लिए और किसी के लिए आपने कभी पूछा ही नहीं है। हमारे लिए सब समान है, देश के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, और हम उन सबको स्वतंत्र संगठन है। वहां संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए हमारा संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को उनको करना है, वो करते हैं। हमसे पूछना चाहिए ऐसा हमारी अपेक्षा भी नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए, उनके टाइम टेबल के हिसाब से कब करना चाहिए, वो वहां के लोगों का काम है। वो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो अपना काम भी नहीं है, हम नहीं करते। प्रचारक देना नहीं देना वो कोई भी पूछेंगे तो हमारे पास उसके लिए प्रचारक हैं, केवल बीजेपी के लिए नहीं है, कोई भी। देखिए मैं बताता हूं, समाज में बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी संघ के प्रचारक चाहिए ऐसे कहते हैं। वो केवल बीजेपी के ही आप लोगों को लगता है, हमको और 100 जगह पर प्रचारक देना है, तो हमारे पास उतने प्रचारक है नहीं है, और वहां के लिए उपयुक्त होते हैं, देखेंगे। इसलिए प्रचारक देना नहीं देना ये संघ ने ऐसे कोई निर्णय नहीं किया है। वो जब योग्य आएंगे, उनके तरह से चाहिए ऐसे आएंगे। ये प्रचारक को भी उस फील्ड में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे मैनेजमेंट के थिंग्स है, वो कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। इसमें वो चलता रहता है।
बाकी चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर वेल ट्रेन्ड, they are capable, they are matured enough, they will do their activities. तो इसलिए ये हमसे पूछकर करना है, हमको कोई लिस्ट वो देंगे, हम ऐसे कहेंगे, ऐसे होता भी नहीं और हम करते भी नहीं है. वो किसी को भी करे, अच्छा करे देश के लिए, इतना ही हमारा कहना है. शुभकामनाएं उनको. Sir, this is B.V. Shiv Shankar from Times of India. The resolve is to create and realize the harmonious society. So, but when a section of society is being segregated by dubbing them as Aurangzeb ki aulad, how can be a harmonious and unison and unified society can be created? Yes, That's the second thing. Second thing is that what do you mean by one nation, one culture? So there is a mention of one nation and one culture. What do you mean by that? First thing is to rise above these feelings. The harmonious society has to be established. So that is why we have said a harmonious society. How it is possible? By persuasive methods, by making them to understand the history properly, in proper setting, in proper perspective. So that is the thing. That's why I said, we draw inspiration from our land, our history, our cultural heritage, our ethos, our national aspirations. Gurudev Rabindranath Tagore had written all these things in those days. Bankim Chandra Chatterjee had written. Madan Mohan Malviya has expressed. Mahatma Gandhi ji said Ram Rajya. So why he said Ram Rajya? All our great freedom struggle leaders, from Ramakrishna Paramahansa to 1947, majority of them, they drew inspiration from our national ethos. And hardly a couple of people might be from the RSS background. All those people are every day remembered by the Sangha Swayamsevaks throughout the country in our morning prayers. They were not RSS people, but they drew inspiration from the land of the culture of this land. We want to emphasize on that. Harmony is possible because of that. Guru Gobind Singh's sons, they were finished, they were destroyed, they were killed because they did not accept certain things. We draw inspiration from their sacrifice. We draw inspiration from Rani Abbakka. We draw inspiration from Bhagat Singh. We draw inspiration from people who have written great texts like Valmiki to organize the constitution, and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Because every one of them, they emphasized on the nation's culture, spiritual heritage, including APJ Abdul Kalam. Kindly see his words. And this is the strongest foundation that can ensure for the harmony of our country. And Rashtriya Swayamsevak Sangh has always emphasized this fact. And we have said those things in our resolve. If somebody is trying to draw inspiration from the invader who wanted to finish this national ethos, who wanted to destroy the cultural heritage of this land, he is an invader. And every society in the world, they have recorded these things about their societies. And in India, in Bharat, if somebody wants to present a distorted version or distorted the narrative, that has to be fought. That is why Rashtriya Swayamsevak Sangh has always said one political emancipation has been possible in 1947 on August 15th. But the mental colonization continued.
So that is why decolonization of mind is a continued freedom struggle at the intellectual level. इसको हम करना चाहते हैं, यह हमने कहा है. सर नमस्कार, मेरा नाम टी राघवन, मैं इंडिया टीवी से हूं सर, यहाँ पर हियर सर. मेरा सवाल जी, I leave it to him where it should stop. Is यस सर. मेरा सवाल ये है कि सर इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है. जिस जमीन पर हम हैं बेंगलुरु में, यहाँ पर भी ऐसे कई सारे केसेस रिसेंट पास्ट में आए हैं जहाँ पर इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. एनआरसी का एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है. क्या इस प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर चर्चा हुई? क्या कोई रेजोल्यूशन इसमें हमने नहीं किया. पहले भी हमने कहा है, जो बांग्लादेशी या कोई इन्फिल्ट्रेटर है जो इलीगली आए हैं, उनके बारे में समय समय पर सरकार को और वेरियस को उसका एक मैकेनिज्म भी है, वो करना चाहिए. ये हमारा हमेशा का डिमांड है. इस प्रतिनिधि सभा में हमने नहीं कहा है लेकिन इन विषयों को बार बार कहने की दैट्स द स्टैंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड मेनी पीपल, नॉट ओनली पीपल फ्रॉम संघ. देखिए, डीजीपी ऑफ बीएसएफ ने और प्रकाश सिंह, and every year he has published the report. Rajeshwar Singh was the governor of Assam, not an RSS man, he was a congressman, he was governor of Singh, and they have all given the reports. Jagmohan ji had given the report. So that is why whenever there is infiltration, illegal infiltration, it is for the governments to take necessary actions through established rules and norms. तो ये होता रहना चाहिए. इस प्रतिनिधि सभा में फिर से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बार बार हम कह चुके हैं. सर, दिस इज डिम्पल शर्मा फ्रॉम फर्स्ट इंडिया न्यूज एंड भारत 24. मेरे दो सवाल है सर. पहला तो एक तरफ जहां जाति विहीन समाज, सामाजिक सद्भाव, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कई बार अपने संबोधन में इसका जिक्र किया है, लेकिन असमंजस की इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन. कई बार असमंजस की स्थिति देखी गई है कि आखिर व्हाट इज द एक्चुअल स्टैंड ऑफ आरएसएस ऑन जातिगत जनगणना. फर्स्ट एंड सेकंड इज महिलाओं को लेकर, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन महिलाओं को लेकर और सशक्त कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास है संघ के आने वाले साल में? पिछले वर्ष देवी अहल्याबाई के जो किया महिला सम्मेलन देश भर में लगभग हजारों के स्थानों पर जो हुआ, more than 5 lakh women gathered in small places also, and the empowerment, social participation of the women should be ensured. This repeatedly not only told, planned, चाकरोटिया हिंदू सम्मेलन, हर चीज में सब में महिलाएं रहेंगी. जितने भी शताब्दी के कार्यक्रम ने कहा है उन सब में देयर विल बी विमेन पार्टिसिपेशन. और ये सोसाइटी में होना चाहिए, केवल संघ में नहीं है, इसलिए समाज में भी होना चाहिए. इसलिए हमने इन विषयों के बारे में बार बार कहा है. सामाजिक परिवर्तन, अब उदाहरण के लिए परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बिना क्या फैमिली सिस्टम को आप ठीक करेंगे? तो इसलिए इन सारे चीजों को, या ग्राम विकास हम कह रहे हैं, तो हर विषय में महिलाओं के एम्पावरमेंट के, महिलाओं के इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोशल रिफॉर्म एंड सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंश्योर्ड. ये हमने कई बार कहा है. संघ इस विषय पर एक कदम आगे जाकर हमने ये भी सोचा, कुटुंब मिलन हर महीने में एक बार अपने वार्ड लेवल पर, जिसको मैंने बस्ती कहा 10,000, और नगर के लेवल पर हर महीने में कुटुंबों के, फैमिलीज के गेट टुगेदर होना चाहिए. इट कैन बी इन ए स्कूल, और इट कैन बी इन ए टेम्पल, और इट कैन बी इन एनी सच पब्लिक प्लेसेस. वो साथ आए, अपने लोकेलिटी, अपने कम्युनिटी, वहाँ के विलेज के बारे में विचार करें, वहाँ के सोशल हेल्थ, वहाँ के प्रॉब्लम्स, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के हिस्टोरिक फैक्ट्स, वहाँ के सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटीज, इन विषयों के बारे में चर्चा करें. वहाँ के फैमिली, वहाँ के नौजवानों के बारे में अच्छे संस्कार देने के लिए विचार करें. इसलिए महिलाओं के पार्टिसिपेशन इन सोशल डेवलपमेंट शुड बी एम्फसाइज्ड. संघ इज टेकिंग दीज स्टेप्स. ऐसे प्रोग्राम हम हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस में शुरू भी किए हैं, ये हम करेंगे. तो सामाजिक सद्भाव बैठक इज ऑल्सो टू इंश्योर, एज यू सेड, ये हमारे समाज के ऑर्गेनाइजेशन में जाति बिरादरी के, कास्ट कम्युनिटीज के हैं,
उसके आधार पर आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए. The variety may be beauty. The difference should not be a matter of conflict. इसलिए हमने कहा है इसमें एक अंडरलाइंग यूनिटी के समय समय पर कहते. इसलिए मैंने बार बार कहा कितने भी अपने देश के अंदर पंथ संप्रदाय जाति वगैरह अंडरलाइंग यूनिटी ये है. देखिए, इफ देर इज a person who wins a medal in the sports, a person who sacrifices in the fight against the aggressive country at the border, भारत भर में कोई भी उसके जाति कौन से थे वो सैनिक जो मर गया, या इसके जाति कौन से थे जो स्पोर्ट्स में मेडल लाया, ये नहीं करते. जब मेडल आया देश के हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है. जब कोई सैनिक मरता है देश के हर व्यक्ति फील करता है. दिस हैपेंस इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इसको हम आग्रह करें ना, नहीं तो क्या होता है जाति जाति के. इसलिए एक ऐसे चीजों को जब हम एम्फसाइज करते जाएंगे इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन हाउस एंड होम्स एंड आर्ट्स एंड इन कम्युनिटीज, तो सोसाइटी हार्मोनियस थिंग विल बी पॉसिबल. नहीं तो हम झगड़े करते रहेंगे. इसलिए सद्भाव लाने के लिए इन चीजों को आग्रह करना चाहिए, ये हमारा कहना है. धन्यवाद. Sir, this is Savitri from Asianet. Yeah, this is sir. नहीं, मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम भी है, थोड़ा सा और एक बार फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा मैं. Sir, yeah. So Kerala is going to the polls next year, and today they have got a new BJP chief also. So what is the analysis of Sangh regarding the growth of the organization in Kerala? Second and small question. Which organization? RSS, the Sangh. The growth of the Sangh in Kerala, especially the state is going to polls next year. And second a small question. Last year you have met ADGP Ajit Kumar, who was then the charge of law and order in Kerala, and there is a probe report also, and the probe report says that motive of the meeting was unknown. So what is your reaction on that, sir? It has been a subject of controversy in the state for past some days. That controversy is over. Sir, this one, the second, the polls in Kerala. That controversy is over. No, the Second, polls in Kerala's growth is exemplary. In Kerala, Sangha work has been expanding fantastically. That is why we had to make two provinces for our administrative organization, administrative purpose, North Kerala and South Kerala, because the growth is such. We cannot manage it as one province. So for administrative purpose, we have already made it into northern southern part because the growth is there, number one. And Kerala has achieved many things in the annals of Sangha. That is, every segment of the society have become the Karyakartas of Rashtriya Swayamsevak Sangh. All encompassing. Whether it is social strata or it is economic strata. So that is the greatest achievement of Sangh in Kerala, which in other states also serves as a model for us. Sir, this is Sir, Dattaji, namaskar. Sir, Jatin from Economic Times. I should know. Sir, last question, sir. Sir, Last question, sir. Dattaji, namaskar. Jatin from Economic Times. Sir, PM is scheduled to visit on the last of this month to Nagpur. Will he be coming to the RSS headquarters also? No, we have not yet received any program details. Secondly, sir, naturally we will welcome. Secondly, in your remarks, you talked about Sohard in the society as one of the objectives of the centenary year celebrations. To create harmony in the society as one of the objectives in the centenary year celebrations. So, sir, in social harmony. So, sir, in that part of that program, will you reach out to the minorities also? You talked about Dara Shikho. You don't consider as minority or majority. This RSS has been telling repeatedly, this is the minority, majority, all are people of this country. Sir, and you friends very well know that the Sarsan Chalak has reached out to many leaders of the so-called minority. That itself is the indication. So is there anything more to add to that? And hundreds of places he has gone and met. And that is highlighted because Sarsan Chalak means
And every one of them do every day. Sir, this is Anil from ETV Bharat. Recently, Karnataka government has passed a resolution in the assembly. Recently, Passed a resolution on what? on demanding union government to reserve 25% of its plan allocation in proportion to the for the development of the SC/STs, and he has blamed especially BJP and RSS of being anti-Dalits, anti-backward class. While saying so, they have passed a resolution, and he has claimed that Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh, these are the only three states which have enacted SCP-DSP Act, and no other BJP-rolled government in the country has passed this. What is your take on that? And do you think such a reservation in plan expenditure is necessary? Simpler, etc. We have already discussed this. Thing is, this is for the BJP government to answer, number one. Number two, any such steps by the government for making better benefits to any weaker section of the society, economically, socially weaker section, is always welcome. And if it is within the constitutional limits, everybody welcomes it. RSS is not something out of that. We also welcome it. Only thing is, the question is, when any such thing is there, what is the record of implementation? Making declaration is always good. What happens when the question of implementation comes? If they are on very bright record, we appreciate. ಎಲ್ರಿಗೂ Sir, but the voices to ban RSS may get louder in the coming days by your anti-RSS camp, especially in Karnataka. people will answer this. I need not answer. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks a lot for coming, not just today, but over all the occasions of interactions in the last couple of days. Please have lunch. Please join us over. Thank you so much and have a good day ahead. Thank you. It's always a pleasure to interact with media, because who hails from the coastal district of Bengaluru in Karnataka. This is the 500th birth anniversary year of Rani Abbaka. She commanded and ruled the small state on the west coast, the headquarters of which was Ullal. I studied in Karnataka only, and my mother tongue is Kannada, and you should wait. Start. So I was telling that I studied in Karnataka, and there is a small lesson in one of our textbooks about Rani Abbaka. In my childhood also, we had visualized how this great lady must have fought against the foreign invaders in the form of Portuguese who had invaded.
And the government of Bharat has on two occasions in the past, in 2003 and 2023, released postal stamps in her memory, and also named a patrol vessel after her because of our prowess in naval command. So we take pride in saluting this valiant woman freedom fighter of our country and particularly of the state on the occasion of 500th birth anniversary of her. We have issued a statement and the copies will be distributed to you, I think, at the end of the press conference. Another thing is the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha in Bengaluru was held in 2021, and after 4 years we have assembled here again. In all, there were 1,482 were expected in this national meeting, which is annually held, and this time 1,443 have attended, making it to 97.3%. And the RSS workers from Arunachal Pradesh, from Manipur, from southernmost tip of our country, Kanyakumari, Jammu Kashmir, they all assemble in this annual gathering, and they deliberated upon many things, and many of the prominent activities that have been conducted during the year were shared, and how we have been able to reach out to the society and various sections of segments of society through our Shaka work and also socially oriented service, seva activity and other activities. There have been multiple and innumerable varieties of the activity that Swayamsevaks conduct. And as you all know, on many occasions of natural calamity also our Karyakartas rush to save life or to provide succor and relief, or after the incident, even for the rehabilitation, as it happened in the case of landslide in Wayanad or floods in some other parts, or some accidents, etc. So those things have been shared here. And in the last 3 years, we have been emphasizing on the expansion of our work on the ground. Our aim is to reach every mandal or a basti. A basti, they are comprising around 10,000 population in urban areas, and a mandal generally comprising 10 to 15, 20 villages. So this has been our target. And next 6 months we are expecting to